Hello and good evening to all of you. And today we are going to be discussing about option chain analysis. So, uh, today markets were really crazy. So we had a almost about 500 points fall from the top. 21,600 odd levels were seen in the morning, and from there on, Nifty almost cracked down all the way up to 21,100. So such a massive amount of selling. And so, what a better day this could be to start kind of a session on option chain analysis using a very new type of a technique that we have devised here in Kotak Research. And this is called, we call it money flow technique. So, which is where we want to understand how much options activity is happening and what is the quantum of the money that is involved in the game. So, with this, let us just start today's session. This is your host, Prasenjit Biswas from the Derivative Research Desk. And let us just move on to the slides. Yes. So here we go. Advanced money flow techniques in option chain analysis. And so the mode of communication for the presentation will be both in English and Hindi. So I will try to balance out in both the languages. एंड सेकंड अगर आपको वीडियो क्वालिटी का लेके अगर कोई इशू है, इफ यू आर लाइक फेसिंग एनी इशू विद द वीडियो क्वालिटी, मे बी यू कैन turn off your data saver mode and maybe switch to a higher resolution. All right then. Right. So आज का जो कॉन्सेप्ट है, today's topic involves some basic understanding of few peripheral concepts before we can actually look at the options data and look at the focus today. So in option chain analysis, like I'm sure that a lot of you are already doing kind of derivative data analysis to get hold of a better view of the market, and even we also use quite a lot of derivative data analysis for especially for intraday predictions and all. So it kind of helps us to understand which way the bias is, because not technically every time you will be able to kind of get a full confirmation. So often these derivative data and OI buildups and all these things, they help us, right? So the first and foremost thing is that we all are familiar with the certain things which are related to derivatives, which is leverage, why derivatives are used, and I'm not getting into the basics of it. So at a top level, what we kind of want to brush up is the concepts of around what is a build-up and unwinds, how they work, and then what exactly is the money flow concept, and how can we quantify this options dynamics. So what are the types of typically options activity happen, like build up, short cover, short unwind? Yeah. So is there any way to measure them? So is there any way to mechanically measure the options activity? And then we will be looking at how this is implemented in the options data and how can we use all of it into real practical examples. And I'm going to take today's example itself, and we will be looking at the real numbers from Nifty. Yes sir, हिंदी में भी आएंगे. So देखिए आज हम क्या करने वाले हैं. जो ऑप्शंस में जो एक्टिविटी है, राइट, विच कुड बी शॉर्ट कवर, शॉर्ट अनवाइंड, लॉन्ग बिल्डअप, ये हम जानते हैं, राइट. ये बिल्डअप्स एंड अनवाइंड्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम इनको देखेंगे कि ऑप्शंस में आप कैसे इनको मेजर कर सकते हैं. बिकॉज एनी नंबर और एनी कॉन्सेप्ट दैट यू टॉक अबाउट, अनलेस एंड अनटिल यू आर एबल टू मेजर, जब तक आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे एक एक नंबर्स के थ्रू, सो आप उसके ऊपर कोई एक्शनेबल स्ट्रैटेजी या प्लान नहीं बना सकते, राइट. तो हम ये देखेंगे कि जो ऑप्शंस की जो एक्टिविटी है,
इनको हम कैसे मेजर करें, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज द मनी फ्लो कॉन्सेप्ट। एंड देन हम ये देखेंगे कि इसको आज के जैसे मार्केट में जहां पे बाजार ऊपर से 500 पॉइंट गिर गया, राइट, सो आज का डेटा अगर ये हमारे सामने में होता तो हम उसमें क्या पिक्चर देख सकते थे, या would that have been of any help or not, right? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बिल्डअप्स एंड अनवाइंड से। सो यहाँ पे आपके सामने में देखिए मैंने एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट रखा है। आई एम श्योर कि आपको ये सारी चीजें मालूम होंगी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दोज पीपल हु आर न्यू टू डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस। सो देखिए बिल्डअप अनवाइंड का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब आप कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, चाहे वो फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस में कॉल हो या पुट हो, एनी एनी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें एक चीज ये होता है कि जब भी कोई एक नया कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता है, मतलब एक खड़ा होता है नया, तो उसमें एक ओपन इंटरेस्ट ऐड होता है। सो एनी वॉल्यूम, लाइक जैसे कैश मार्केट में एक अगर शेयर ट्रेड हो तो उसमें एक आपको क्वांटिटी का वॉल्यूम आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम का आप एक तरीके से प्रॉक्सी समझ सकते हैं ओपन इंटरेस्ट को, राइट। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मार्केट में देखिए हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बायर होगा, एक सेलर होगा, राइट। सो अगर एक ओपन इंटरेस्ट अगर क्रिएट होनी है, सो देयर हैज टू बी अ बायर एंड देयर हैज टू बी अ सेलर। सो ऐसा नहीं है कि मतलब अकेले अकेले ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो हमेशा एक बायर और एक सेलर मिलके ही एक ओपन इंटरेस्ट बनाते हैं। सो द पॉइंट इज दैट व्हेन अ बायर एंड अ सेलर meet, they can create an open interest if they agree to transact at a given particular price. So that's how open interest is created. Now, can we actually somehow quantify whether it is a buyer initiated trade or a seller initiated trade? क्या हम जो भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, क्या हम उसको ये देख सकते हैं कि क्या वो बायर ने क्रिएट किया है या सेलर ने क्रिएट किया है? क्या इज देयर एनी तरीका जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं? अब देखिए जब हम बाइंग की बात करते हैं, तो बाइंग में भी अब ऐसा है कि दो टाइप के आदमी बाई कर सकते हैं। पहला वो जो ऑलरेडी काइंड ऑफ बाहर बैठा है, वेट कर रहा था, उसको टेक्निकल सिग्नल आया और उसने एक नया फ्रेश बाई किया, राइट। सो बाइंग फ्रेश बाई, सो दैट इज वन। दूसरा ये हो सकता है जो पहले से शॉर्ट था, अब जो शॉर्ट वाला बनता है वो भी अगर उसको अपने सौदे क्लोज करने हैं, सो वो भी बाई करेगा ना। सो इफ somebody is short in the market, so that is the second category of a person who can again buy. So when we look at a buyer, so it could be a fresh buy or it could be a square of buy, correct? Similarly on the sell side, it could be a fresh short, fresh selling, or it could be a selling from the person who was holding a long position earlier, right? So it is a square of selling. So with this we can in a way categorize all these transactions into four categories. So either buying from a fresh, if that is the scenario, it is called a long buildup. Now in such a case, please pay your attention here. As you can see this on the screen, when there is a long buildup, in case of a long buildup, there is a buying and it is a fresh buying. So if the buying happens, obviously the prices will go up. And since it is a fresh buying, so fresh open interest has to be created, means the open interest will increase. So that's why there is this OI is positive and price change is also positive. तो उसको हम लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं। अब वहीं पे देखिए अगर प्राइस बढ़ रहा है बट अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, मतलब क्या कि ये बाइंग था, प्राइस बढ़ा मतलब बाइंग था, सिंपल बात है। सो इफ द प्राइस हैज गॉन अप, देयर इज बाइंग, दैट्स फॉर वन। नाउ वी हैव टू लुक एट द ओपन इंटरेस्ट, सेकंड पार्ट। So the open interest, if we see that it is going down, which means that the buying is happening, but it is not from the fresh buyers, it is rather from the existing shorts. So positions are getting squared off, and that's why there is a buying because of the short unwinding. So similarly on the other side, if you see if there is a price drop, so whenever there is a price drop, it means that it is a selling is happening. So the price change has to be negative. That's one. Now if the OI goes up, which means fresh shorting is happening, right? Because prices are going down and fresh short open interest is building up.
But in case if the fourth category, if the prices are going down but the open interest is coming down, if the open interest is reducing, then it means that it is only the long unwind, right? So I hope that this particular grid is clear with you. If you want, you can take a screenshot of it. And so this is the the basic framework. ये एक बेसिक फ्रेमवर्क आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, है ना, क्योंकि सारा जो चीजें इसके ऊपर ही बिल्डअप किया हुआ है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर में, जहां पे देखिए हम जब हम ऑप्शन में एक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्चुअली क्या है ना, टोटल अगर आप कॉल साइड या पुट साइड में मिला के अगर आप देखेंगे ना, तो दोनों साइड में ही 4 कैटेगरी के चीजें हो सकती हैं। तो अगर हम कॉल की बात कर लें तो आप क्या कर सकते हैं कॉल के साथ में? You can do 4 things with any call option, like fresh buying. So either there could be a fresh buying on a call option, or there could be a fresh short on a call option, correct? Or it could be a short unwinding or a long unwinding. So similarly, in case of a put also, either this could be a fresh short, fresh buy, or short unwinding or long unwinding. So this way you can actually, if you combine all of the calls and puts and all these combinations, you will get total 8 categories. Now we can grade them in terms of the amount of bullishness and bearishness involved in the game. So say for example, अगर मैं सबसे ज्यादा बुलिश हूं, ये जो सारे जो हमने कॉल पुट को मिला के जो हमने 8 कैटेगरी के जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, तो उसमें अगर हम इसको एक बेरिश टू बुलिश कैटेगरी में अगर हम इसको ग्रेडिंग करेंगे, तो देखिए सबसे ज्यादा बुलिश जो एक आदमी कर सकता है वो है सीधा नेकेड कॉल बाय। वो इसलिए क्योंकि जब आप नेकेड बाय कर रहे हैं तो पहला तो ये है कि आप फ्रेश ट्रेड ले रहे हैं, मींस यू आर taking fresh risk in the market. So fresh trade means fresh risk in the market, right? So you are putting your money on the table, and then you are buying an option, which means that you are taking theta, time value आपके अगेंस्ट में है। और हम जानते हैं कि अगर आप ऑप्शन बाय करके अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, so the spot movement has to be very quick, है ना? तो वो केस में अगर आप बहुत श्योर हैं तभी आप एक कॉल बाय करेंगे, एग्रेसिव एक स्टांस होगा आपका नेकेड कॉल बाय करने का। दूसरा जो आप बुलिश काम जो है, मतलब सेकंड मोस्ट बुलिश थिंग जो आप कर सकते हो वो है एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर देना। अब पुट ऑप्शन को शॉर्ट करना, उसमें देखिए क्या है कि अगेन सिंस यू आर क्रिएटिंग अ फ्रेश ओपन इंटरेस्ट और अ फ्रेश ट्रेड, so I would say it is the second most riskier thing on the bullish side, because the moment you take a fresh trade, obviously you are taking a fresh risk. Second, you are selling a put option, which means you are pretty sure that there is no downside, at least it won't go down, yeah, क्योंकि पुट ऑप्शन बेचने में आपका रिस्क बहुत ही ज्यादा है, वर्चुअली अनलिमिटेड है ना। So when you are sure about the direction of the market, then only you will sell a put. Now the third thing that you can do is, if you are bullish on the market and if you feel somehow that markets maybe could rally quickly, and you are short on the call option, so then what will you do? You will unwind or close your short position if you have on any call option. अगर आप कॉल शॉर्ट करके अगर आपका पोजीशन खड़ा है और अगर आपको लगता है कि मार्केट में रैली आ सकती है, तो आपका क्या है कि शॉर्ट में आप फंस जाएंगे। तो वैसे केस में आप कोई ऑप्शन को शॉर्ट नहीं रखना चाहेंगे, राइट? सो दैट इज द थर्ड मोस्ट बुलिश थिंग दैट यू कैन डू। अब इसमें देखिए ये क्यों थर्ड है, क्योंकि इसमें देखिए हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, यहाँ पे हम सौदे काट रहे हैं, तो जब भी आप सौदा काटेंगे वो हमेशा पीछे की तरफ ही होगा इन टर्म्स ऑफ दी एग्रेशन लेवल, बिकॉज चाहे आप नया कॉल खरीदे या पुट बेचे, दोनों में ही आप नया सौदा ले रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एंड यू आर टेकिंग फ्रेश ट्रेड्स। बट दिस कॉल अनवाइंडिंग, शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग कम्स एट द थर्ड प्लेस, बिकॉज यू आर स्क्वेयरिंग ऑफ योर ट्रेड्स, यू आर कमिंग आउट ऑफ द मार्केट, यू आर रिड्यूसिंग योर रिस्क। तो इस वजह से वो थर्ड प्लेस में। और फोर्थ प्लेस में ये है कि आपने आपका जो पुट ऑप्शन था वो आपने काट दिया, आप लॉन्ग पुट थे, मतलब आपका डाउनसाइड पहले से ही लिमिटेड था, बहुत बड़ा कोई रिस्क था नहीं। सो कंपेयर टू अ लॉन्ग पुट एंड अ शॉर्ट कॉल, बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, राइट? अगर आपने पुट ऑप्शन खरीद के रखा है वीजा भी एक
कॉल भी बेच के रखा है, दोनों ही सौदे नेगेटिव हैं। बट अचानक से अगर मार्केट मान लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं अभी बढ़ने वाला है, सो आप पहले कौन सा काटेंगे? जो आपका पुट लॉन्ग है वो काटेंगे या जो कॉल शॉर्ट है वो काटेंगे? ऑब्वियसली जो कॉल शॉर्ट है वो काटेंगे। क्या लगता है आपको? बताइए कमेंट्स में। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक दो पोजीशंस हैं आपके पास में, एक है आपका पुट शॉर्ट, आई मीन पुट लॉन्ग, आप पुट लेके बैठे हैं, और दूसरा एक और ट्रेड है जिसमें आपने एक कॉल शॉर्ट किया हुआ है, दोनों ही मंदी के ट्रेड है, बोथ द ट्रेड्स आर नेगेटिव ऑन द शॉर्ट साइड। नाउ इफ यू फील after some point of time that market is going to reverse, market will go up now, so which one will you square up first? Will you uh, will you kind of close the long put or will you close the short call? Which one will you start, I mean do first? Obviously you will close your short call because that is where the unlimited risk is. Long put in case market goes up, अगर आप पुट लेके बैठे हैं उसमें मार्केट अगर ऊपर चला जाए तो आपका कोई अनलिमिटेड रिस्क नहीं है, राइट? तो इस वजह से हम उसको चौथे पोजीशन में डालेंगे। सिमिलरली जब आप नेगेटिव साइड से देखेंगे तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप देखते हैं, सो मोस्ट बेरिश थिंग इज लॉन्ग पुट, देन शॉर्टिंग अ कॉल, दैट इज द नेक्स्ट बेरिश थिंग दैट यू कैन डू। थर्ड में अगर आप पुट में शॉर्ट हो, जैसे आज का सिचुएशन था, आज अगर कोई पुट में शॉर्ट था तो उसको फटाक से काट लेने चाहिए था, अगर जहां पे भी उसको लगता है कि मार्केट काइंड ऑफ गिरने वाला है, राइट? और अगर आप लॉन्ग कॉल थे तो वो आप लास्ट में भी काटते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 500 पॉइंट मार्केट गिर गया लेकिन आपके लॉन्ग कॉल में आपका जितना प्रीमियम दिया हुआ उससे ज्यादा लॉस नहीं होना है, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन इन अ वे grade or scale these all these activities from bearish to bullish. अब देखिए इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज वो ये है कि हम क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं मनी फ्लो को। अब मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा इसके बाद बताने वाला हूं। पहली बात ये है कि हमने तो ये समझ लिया कि भाई लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंड, शॉर्ट अनवाइंड क्या है, ठीक है ना, फ्रॉम ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने में एक you have a टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? आप एक टेबल देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखें तो ये एक चाहे कॉल हो या पुट हो, यहाँ पे एक एग्जांपल 19,500 के स्ट्राइक प्राइस का लिया गया है। अब मान लीजिए 10 बजे सुबह 19,500 स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल या पुट थे, वॉट एवर यू वांट, उसमें अगर मान लीजिए उसका ओपन इंटरेस्ट था 1 लाख और उसकी प्रीमियम वैल्यू थी 100 रुपए, राइट? सो एट 10 o'clock in the morning the open interest was 1 lakh and the premium was 100 for any, let's say 19,500 option contract. Maybe it could be a call or a put, whatever it is. Now let's say at 11 o'clock after 1 hour you see that the price has gone up and open interest has also gone up. So how will you qualify this? This will be qualified as a long build up activity, right? But what is the amount of money flow? So for the money flow, what we are doing here is that, please इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, please pay your attention at this particular point, that money flow is nothing but the absolute difference between the OI change, I mean compared to a previous number and the current number. So we always have a reference point and we are looking at the current data, right? So the reference point could be yesterday's closing data or it could be early morning. So when you are trying to analyze Nifty for intraday like the way we do it, so we take a reference point at around 10:30 in the morning. So that is becomes our reference data, right? We do not take the yesterday's data. We prefer to take the around 10 o'clock data of the total open interest and everything, right? That becomes our benchmark number. Why? Simple reason, because we want to eliminate the initial noise. So जो सुबह मार्केट खुलते ही जो इनिशियल नॉइज होता है उसके बाद हम अपना डेटा लेना चाहते हैं, इस वजह से हम 10 या 10:30 तक का हम वहां से हम इनिशियल अपना डेटा लेते हैं, ठीक है? अब उसके बाद में फिर जो है हम सब्सिक्वेंटली स्लॉट बाय स्लॉट उसको फिर हम कंपेयर करते जाते हैं, ठीक है? सो अगर आप इस एग्जांपल को यहाँ पे देखें तो ये एक सिंगल कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का आपका डेटा है। तो इसमें मैं यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्टिविटी कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे और उसमें
मनी फ्लो कितना है। सो मनी फ्लो का जो फॉर्मूला है वो है टोटल ओपन इंटरेस्ट चेंज इनटू करंट प्रीमियम माइनस प्रीवियस प्रीमियम। मतलब क्या कि कितना ओपन इंटरेस्ट, अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोचें इस चीज को, तो कितना ओपन इंटरेस्ट ऐड या डिलीट हुआ है या कम रिड्यूस हुआ है वर्सेस दी मार्क टू मार्केट डिफरेंस ऑफ दी ऑप्शन। समझ रहे हैं? मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका बेसिकली आप एम टू एम देख रहे हैं कि कितना पैसा सिस्टम में घुस रहा है। So if you are only measuring the, the changes in the open interest and multiply that with the price difference, so then you will understand what is the quantum of the mark to market absolute money you have seen, getting into the system or coming out of the system, depends on what is the activity. So for example, if in this case, if 125 is the current premium versus 100 earlier, and from 1 lakh the open interest has gone up by 20,000 at 1,20,000. So at this point we have an addition of 20,000 on the open interest. Okay, so we are taking 20,000 as the open interest absolute value. Now what is my price change? Price change is plus 25. So therefore my money flow will be calculated as plus 25 into 20,000 open interest change, and obviously you can multiply the lot size, right? So this is how this will be calculated. So this way, if you proceed, you can actually, calculate the money flow for the entire option chain, all the contracts from one slot to another slot, right? So that's what we will be looking at. Now we will want to, do it with real data, and I will flip to an Excel sheet. Okay, yes, I think I'm on the right screen and you are able to see an Excel file. Okay, so it is a simple template that I have devised, which is where again you can see this image, which is just for your, reminder purpose that buying could happen either a fresh or a square off. So if it is a fresh buy, we call it as long build up, or else it will be a short unwind. Similarly, if there is a fresh selling, which is open interest is positive and price difference is negative, then it is a fresh short, and similarly long unwind. So this matrix we will want to remember now. So money flow is again the formula which says current OI minus previous OI absolute value. So I am taking the absolute difference of the OI change, multiply that with the premium change, and that comes with the sign as well. तो यहां पे मान लीजिए आपका दो डेटा रेफरेंस के हिसाब से, मतलब यू विल हैव टू सेट्स ऑफ डेटा। सो पहला तो देखिए ये है कि ये हमने आज का 10 बजे का डेटा हमने ले लिया। ओके, सो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ब्लू कलर में जो शेडेड एरिया है, सो ओके द फर्स्ट कॉलम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉलम। सो ये जो आप देख रहे हैं द वन इन द लेट्स से द येलो, सो दिस इज माय स्ट्राइक प्राइस, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है और हम बात कर रहे हैं 21 दिसंबर 2023 ऑप्शन सीरीज की, जो कि कल के एक्सपायरी का सीरीज है, राइट। तो इसमें हमारे पास में ये हमने ऑप्शन चेन जो हम एनएसई के वेबसाइट से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वहां से हमने डायरेक्टली ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसको हम सीएसवी फाइल में हम डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से हमने क्या क्या लिया है 10 बजे का ये हमारा डेटा है। इसमें हमने ये देखिए ये सारा हमारे पास में यहाँ से डेटा है। सो these columns in blue, I think you are able to see the screen, आपको एक्सेल दिख रहे होंगे, राइट। सो द बेसिक आइडिया इज कि यहाँ पे आप इनिशियल जो भी आपका डेटा सेट है, मतलब 18,200 से लेके आपके पास में स्ट्राइक प्राइस है 22,950, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉल की ओआई कितनी है, कॉल का एलटीपी क्या है, then you want to also record what is the put OI and what is the put LTP. So this is the data which I will call as the reference data, right? So this is my reference data at 10 o'clock. Now let's say the next thing that we want to kind of evaluate is when there is a some kind of a technical signal happening. तो नेक्स्ट जो भी हमारा डेटा आएगा, ये डेटा मैं अभी फिलहाल यहाँ से स्क्रीन से हटा दे रहा हूँ आपके सामने से,
सो अभी ये हमने 10 बजे का डेटा तो ले लिया, अब अगला जो डेटा है वो देखिए वो हम एक ऐसे पॉइंट पे लेना चाहेंगे जब हमको एक कोई टेक्निकल सिग्नल मिल रहा है, राइट? सो वो टेक्निकल सिग्नल को हम इस ऑप्शंस डेटा से वैलिडेट करना चाहते हैं। सो दैट इज द आइडिया। तो यहाँ पे एक ही मिनट, मैं आपके सामने में जस्ट एक इमेज यहीं पे मैं डाल रहा हूँ। यस, आई थिंक यू आर एबल टू सी एन इमेज एज वेल, राइट? तो देखिए यहाँ पे एक चीज, देयर वाज अ टेक्निकल ट्रेंड लाइन जो कि एक मिनट, इसको हम आगे का नहीं, ये जस्ट हम क्लोजली यहाँ पे फोकस करना चाहेंगे इनिशियल आवर्स में, राइट? तो आप एकदम स्क्रीन के अगर आप राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो देखिए ये 11:40 ये जो ब्लैक कलर में जो नंबर्स लिखे हैं 1140, इट इज टाइम, ये टाइम है, ठीक है ना? तो 11:40 के करीब देखिए एक नेगेटिव कैंडल एक ऐसा बना जो इसके पहले जो एक यू नो एक लो बना था, एंड दिस इज अ 10 मिनट चार्ट, ठीक है ना? ये आपके सामने में जो भी आप देख रहे हैं, इट इज अ निफ्टी 10 मिनट चार्ट इंट्राडे के लिए, राइट? सो आई प्रेफर अ 10 मिनट टाइम फ्रीक्वेंसी फॉर इंट्राडे एनालिसिस एंड ऑल। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या था कि 21,534, दिस वाज द लास्ट लो एट दिस पॉइंट। अब जाहिर सी बात है कि जब ये लो अगर टूटता है, ऑब्वियसली देयर इज अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट रनिंग आल्सो व्हिच वी वांट टू काइंड ऑफ अगेन वी आर वाचिंग एंड वी होप कि उसके नीचे में एक ब्रेकडाउन आएगा तो सेलिंग और बढ़ सकती है, बट एट दिस पॉइंट आप उसको नहीं सोच रहे हैं, आप खाली ये देख रहे हैं कि 11:40 पे आपका 21,534 का लेवल जो है वो टूट गया। मतलब क्या हुआ, एक आपको टेक्निकल स्नैग यहाँ पे आया, एक टेक्निकल वीकनेस पहली बार आपको यहाँ पे दिखा, ठीक है ना? अब जो है उसके बाद आप थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। दिस इज वेयर यू वांट टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग द डेरिवेटिव डेटा एंड यू वांट टू कंपेयर, क्योंकि आप लेट्स से अगर आपका ध्यान है कि मार्केट काफी ओवरस्ट्रेच्ड है और लेट्स से मार्केट्स आर प्रीटी ओवरसोल्ड एंड यू वांट टू लुक फॉर सम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एज वेल, यू आर ओपन टू शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, है ना? सो वैसे केस में जब भी आप एक कोई भी स्लाइट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में कोई इंडिकेशन देखते हैं टेक्निकली, सो यू वांट टू क्विकली रेफर बैक टू अदर टूल्स। तो देखिए ये एक बात और मैं ऐड कर दूं इसमें, डेरिवेटिव डेटा का एनालिसिस इज अ सेकेंडरी टूल, ये हमेशा एडिशनल टूल है, ये मेन टूल नहीं है। मेन टूल आपका चाहे आप टेक्निकल लगा लें और कोई मेथड लगा लें, मेन टूल आपका दूसरा होना चाहिए। जैसे मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं पूरा रिलाई करता हूं एज माय प्राइमरी टूल, डेरिवेटिव डेटा को मैं सपोर्टिंग फैक्टर के हिसाब से यूज करता हूं टू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हर बार टेक्निकली आपको पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती है, राइट? सो दिस इज अ secondary confirmatory tool for me, and yes, it is a very powerful tool, no doubts about that, but then yes, आपको एक टेक्निकल इंडिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक 11:40 में देयर वाज वन नेगेटिव कैंडल जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के सामने में, बराबर? अब उसके बाद में क्या, उसके बाद में हमने डेरिवेटिव डेटा जो है देखिए 12:10 में हमने रिकॉर्ड किया। सो 12:10 का मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ। सो लेट मी पुल अप द डेटा and I'm going to pull up the same data. Uh, just a minute. So this is the data for at 12 o'clock, 12:10 to be precise. So again, now what we have is the call open interest and the call price, and put open interest and the put LTP, right? Now यहाँ पे this is where our interesting activity will start. ये एक छोटा सा एक्सेल का आई मीन एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने में एक बार वापस से करके दिखा रहा हूं। देखिए LUSB ये क्या है, ये करते करते आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, एक कॉल ऑप्शन की एक्टिविटी को मेजर करना चाह रहे हैं, राइट? कॉल ऑप्शन की एक्टिविटी को मेजर करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द ग्रिड दैट आई हैव शोन अर्लियर, ये वाला ग्रिड, ये जो ग्रिड हम बात कर रहे हैं ना, ये जो इसके पहले जो हमने डिस्कस किया हुआ था, दी लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप वाला जो ग्रिड था, वो वाला, है ना? इस ग्रिड की मैं बात कर रहा हूं। तो बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स वी वांट टू क्वांटिफाई ईच ऑफ देम, राइट? सो इसमें देखिए इसको ऐसे हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में, आई होप दिस इज वेरी क्लियर विथ यू, व्हाट डू वी हैव टू सेट्स ऑफ डेटा, दिस इज द ओल्ड डेटा एंड दिस इज द न्यू डेटा। सो
The old data is from 10 o'clock in the morning, and this is at 12 o'clock, 12:10 to be precise. Okay. So how we can check this? What is the activity is? पहला ये है कि हम क्या देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट देखेंगे. सो पहली बात, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है क्या? सो आई एम गोइंग टू कंपेयर द करंट ओपन इंटरेस्ट. F3 is the current open interest. If the current open interest is greater than the previous open interest, ये मैं आपके सामने में इसलिए कर रहा हूं ताकि in case if you want to do all these things on your own, maybe build this kind of a sheet for yourself, you can do it. So the second thing is that you want to check the prices. So first filter check is on open interest. So if the call OI is greater than the current call OI is greater than the old call OI, which means OI is increasing. Now if the price is also increasing, so if the current price is greater than the last benchmark price, then it is a long build up. So I am going to write LB. LB means long build up. Now if it is not, which means OI is going up, OI बढ़ रहा है लेकिन प्राइस आपका नहीं बढ़ा, प्राइस OI बढ़ने के बावजूद भी प्राइस घटा है. So which means it is on the other side. So it is a short build up. अगर ये लॉन्ग बिल्डअप नहीं है तो शॉर्ट बिल्डअप है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है. ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है मतलब बिल्डअप हुई है. अब वो लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्राइस. सो अगर प्राइस बढ़ा है तो लॉन्ग बिल्डअप, प्राइस गिरा है तो शॉर्ट बिल्डअप. नाउ द अदर थिंग, अदर सिनेरियो वेयर माय ओपन इंटरेस्ट हैज नॉट गॉन अप, एल्स पार्ट मतलब उल्टा, अगर ये फॉल्स हो तो मेरा ओपन इंटरेस्ट, ये अब जो हम करने वाले हैं वो सिनेरियो है जहां पे ओपन इंटरेस्ट हैज रिड्यूस्ड, ओपन इंटरेस्ट कम हुई है. तो इफ द ओपन इंटरेस्ट हैज रिड्यूस्ड, देन आई एम गोइंग टू चेक इफ, अगेन प्राइस का हम चेकिंग करेंगे, if the price has increased or not, if the price has increased or not, if the current price is greater than the old price, then what is the situation? ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, मतलब क्या? शॉर्ट कवरिंग हो रही है, राइट? क्योंकि अगर ओपन इंटरेस्ट देखिए कम हो रहा है मतलब अनवाइंडिंग हो रही है, सीधी बात है. तो इसको हम अनवाइंडिंग लिख सकते हैं, SU लिख सकते हैं. तो अनवाइंडिंग तो हो रही है, पहले U लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ओपन इंटरेस्ट हैज कम डाउन. ये बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे. अब ये देख रहे हैं कि प्राइस भी प्राइस हैज गॉन अप. सो प्राइस गॉन अप, ओपन इंटरेस्ट कम डाउन, मतलब शॉर्ट वाले ने कवर किया है. तो अनवाइंडिंग फ्रॉम द शॉर्ट, सो SU, शॉर्ट अनवाइंडिंग. Else again it will be an unwinding, but it will be from the long side where the price has also gone down, open interest has also gone down, and the prices are also coming down, which means those who are long in the market, they are now closing their position. So the initiation is happening because of them. Obviously there is somebody who is also taking a counter trade, but who is initiating the trade? If the open interest is going down, the prices are going down, it means selling is happening. And since open interest is also going down, which means existing long players are selling their positions. So they are the ones who are initiating the trade, and those who are short in the system, they are covering back. So the initiation is from the short, those who are longs, and unwinding them. So therefore it is this way. So this is what is the matrix. Now we will copy this formula across, and this is what we will get, right? So now this was the scene at, now this is what you got. Let me save this file. This was the scene on the call side. So similarly on the put side also the same formula will apply. We will check the put open interest and whether prices have gone up or not. So the same concept. But what about the money flow? So when we talk about money flow, call money flow, here what we are going to do is simply look at the call price changes and the open interest change. So if you will notice the formula, what we have is G2 minus C2, means current call LTP is subtracted with the previous call price. So what is the difference? Whatever is the difference in the option price, that is multiplied by the
absolute value of the open interest change into 50. Why? Because we want the lot size also to come in, and I have at the end I have divided by 1 lakh so that the figures are reported in lakhs, otherwise these figures will be very big. So this is how you calculate the money flow. And again reiterating, just to highlight, this is the formula that we have used, right? This is the formula that we have used to calculate these money flow. So similarly on the put side, the same formula is applied. So let's take an example for a particular strike price. So we are taking an example of a, let's say, 21,500 strike price itself. Just a minute. All right. Okay, now there is one thing that you have to do. There are some errors. Do you feel that there is an error already in the some formula? कहीं पे थोड़ा थोड़ा नंबर मैच नहीं हो रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे वैल्यूज नहीं आ रहे हैं. तो ये एक एनएसी का भी एक प्रॉब्लम है. ये भी अच्छा हुआ कि सामने में आ गया. देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा एकदम जीरो से सिखा रहा हूँ, इसके लिए सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने में लाइव आ रहे हैं, राइट? तो देखिए करना ये होता है, जब भी आप एनएसी का भाव कॉपी, आई मीन जो ऑप्शन चेन का जो सीएसवी फाइल एनएसी से आप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, सो वहां पे दिक्कत ये आती है कि नॉट ऑल द नंबर्स आर इन न्यूमेरिक फॉर्मेट. कई कई जगह पे वो एक टेक्स्ट बेसिस पे कॉमा से सेपरेटेड भी रहता है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको जो है ना टोटल जो भी है, इसको आप एक बार कंट्रोल एफ शॉर्टकट की है, उसको दबा के आप रिप्लेस कॉमास, यहाँ पे एक कॉमा दिया हुआ है, ओके, कॉमास विद ब्लैंक. अगर आप ये रिप्लेस ऑल ऐसे मारेंगे तो देखिए, ये देखिए 32 कुछ डेटा दिखा रहा है जो कि नॉन न्यूमेरिक थे, है ना? सो ये अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया. अब देखिए सारे नंबर्स आ गए हैं, देखिए, है ना? क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो 21,500 के स्ट्राइक प्राइस पे कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा था, राइट? सो ये भी एक मजेदार चीज है जो आई थिंक आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे. सो आई एम जस्ट slightly zooming in and making these columns smaller so that you can see the actual meaningful part of it. So this is how things are, right? Okay. So now let us look at this particular strike price that we were talking about, 21,500. Okay, this is the strike price we are talking about. So let me just bold this up. So isme let us understand what this says. It says SB. So 21,500 call option, it says SB, which means short build up. Why short build up? Because you see the open interest has gone up. So from 1,90,000 it has gone up to 2,57,000. Do you see the difference here? Okay. So the OI has gone up. Now why it is a short? Because the prices have gone down from 97 rupees to 78. So the prices here have come down. So the open interest has gone up, whereas the prices have come down. So open interest, let me put this in green color. So open interest has gone up. I think you are able to see, right? So just put a yes or a no. Right. So the open interest has gone up and the prices have come down. That is why it says short build up, right? You have it in front of you. Now money flow. So what is the money flow? So for money flow, what we will do is simply take the open interest difference. How much is the difference? 2,57,000 minus 1,90,000 is somewhere around 67,000. Multiply that with 50, correct? And then why 50? Because that is the lot size. And so if we want to just get the numbers, basically it is what is the difference in OI? 2,57,000 minus 1,97,000. So we get 66,731 into 50, which is the lot size. So this is the contracts. And then how much is the price difference? We want to take the absolute value. So I'm just taking the positive differential here. So I will do a minus
97 minus 78. So you see, this is what it is. So now I want to report this in lakhs, so I will divide this with 1 lakh. So that is what I got, right? Now the point is that I want to see this number as a positive number or a negative number. I want to see this as a negative number. I want to see this as a negative number. Therefore, what I will do is I will always do a subtraction of the like a current price, the current price minus the old price, right? So this is what I got, and then you divide with 1 lakh, so that figures are in lakhs. So this is basically the formula, right? So I'm just trying to explain. So this is how I got. So it says that we got an outflow or an M2M differential into the system of to the tune of about 640 lakhs, which is 6.4 crores. So from 10 o'clock to 12 o'clock in this particular contract, 21,500 call option short build-up happened, and to the tune of 6 lakh 40 6 crore 40 lakh rupees, right? So that is the M2M. So similarly, see, whenever there is a selling means system se paisa bahar ja raha hai, right? Selling means inherently that money is getting out of the system. So any selling will come with a negative sign. Now selling can, again I'm repeating, selling can happen because of two people, either somebody going a fresh short or somebody who had a long, now he is selling, he is exiting positions, right? So any option contract, whether it is a call or a put, it doesn't matter. Any option contract, what is the activity happening is purely decided based on open interest and price change. So if it is a selling activity, we report this money flow in terms of a negative sign. If it is a buying activity, we report this as a positive sign. So buying could be a fresh buy, which is a long build up, or it could be a short unwinding, which is also known as short covering, right? So in either case, there is a buying happening. Now, in terms of the outlook, see, short build up on the call side, is a negative activity, correct? But on the put side, if there was a short build up, it would have been a positive activity. So the context of the market, the what is the outlook, that depends whether a call is shorted or a put is shorted, or and what is the activity happening, correct? Now let's go to the similarly the 21,500 put option. Let's see what happened there. So now we compare the put option side. Okay, so in the put option, the previous open interest was at 2,48,000. From there on, it went to 2,24,900, which means the open interest came down. ओपन इंटरेस्ट कम हुआ यहाँ पे. सो अगर आप यहाँ पे इसको अगर आप लेंगे तो देखिए, इसको हम यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट वापस से कर रहे हैं, ठीक है ना. सो ओपन इंटरेस्ट हमारा चेंज कितने का हुआ? ओपन इंटरेस्ट हमारा चेंज हुआ यहाँ से यहाँ. दिस इज द ओपन इंटरेस्ट चेंज 23,600. वी मल्टीप्लाई दिस विथ 50, करेक्ट? So 50 into the open interest differential. So this is the in terms of the number of contracts. Now with this we also want to multiply the price differential. So what is the price differential? Price differential is the current price minus the old price of the put option. So what is the old price? Current price is 47 and the old price was 36. So the price increased, open interest decreased, price increased, and you see this is the number, and then we want to divide this with lakh in with 1 lakh, so that the figures are in lakhs. So this is the number we got, right? So if we simply drag the formula, this is what we got: 131 lakhs, which means 1,31,000. But this is the activity which is on the put side. It is a short unwind. Why short unwind? As I already explained, unwinding because of the fact that open interest has come down. Here the open interest, you see, has come down. The open interest has come down, right? Open interest has come down. And what about the prices? Prices have gone up. So because of the price
price is going up, so we will assume that this is a buying. But who is doing the buying? Is it a fresh buy or a buy from the guy who was short? So it is a not a fresh buy, because if the fresh buy would have happened, open interest would have gone up. So open interest ऊपर नहीं गया है, open interest कम हुआ है, तो इसके लिए ये जो बाइंग है ये शॉर्ट कवरिंग का ही बाइंग है, करेक्ट। तो इसके लिए ये शॉर्ट अनवाइंडिंग, और इसमें पैसे हमने कितने लगे, कितने का डिफरेंशियल आया एम टू एम मनी फ्लो जो हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में 1,31,00,000 पॉजिटिव साइड में, क्योंकि ये बाइंग हुई है ना। सो यहां पे देखिए डिफरेंस, कॉल के केस में दिस वाज -640 because it was a selling activity which happened, and this was a short cover which is a buying, therefore it is a positive number, right? अब देखिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के जब हमने ये इस तरीके से नंबर्स को हमने मेजर कर लिए हैं, यहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के हम नंबर्स को इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहला एक काम करने ये वाले हैं कि इनको एक पाइवट टेबल के ऊपर हम डाल देंगे, ताकि हमको ये पता चले कि कौन से बास्केट में कितने पैसे लगे थे, कौन से बास्केट में कितने पैसे लगे थे। तो ये हमारे सामने में ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए इधर में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस सेक्शन पे, तो दिस इज वेयर कॉल एक्टिविटी और पुट एक्टिविटी ये आपके सामने में आ गया। कब? ये आपका 10 से 12 के बीच का एक्टिविटी है, तो 10 से 12 ये हमारा सीन था, ठीक है ना। अब इसमें हमको एक और चीज हम फॉलो करना चाहते हैं, वो है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ द मनी फ्लो, आप एक एंगल हो गया मनी फ्लो का, दूसरा एक और एंगल आप देखना चाहते हैं किसका? पीसीआर का, पुट कॉल रेशियो। सो यहां पे टोटल देखिए, जब आप 12 बजे की बात कर रहे हैं, तो 12 बजे में टोटल यहाँ पे जो कॉल का जो था, टोटल सम ऑफ टोटल वाई ऑन द कॉल साइड was 28,55,000, है ना। एंड ऑन द पुट साइड the OI was 24,16,000. So what was my PCR? PCR was at 24,16,000 divided by 28,55,000. So the PCR was somewhere around 0.85. So my PCR was somewhere around 0.85. Let me enlarge it. So this was my PCR, right? Now as I am talking about, हमारे पास में टेक्निकली पिक्चर क्या चल रहा है पीछे में। टेक्निकल पिक्चर हमारा ये है कि यहाँ पे निफ्टी में एक टेक्निकल एक वीकनेस का एक इंडिकेशन मिला है, और उसके साथ में हम 12:10 में हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो पीसीआर है वो 0.85 है, मतलब 1 के नीचे है, और ये एक जनरली आप नेगेटिव कोनोटेशन के साथ में इसको आप पकड़ सकते हैं। तीसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो मनी फ्लो का जो हिसाब चल रहा है, वो ये बताता है कि भाई कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डिंग एक्टिविटी हो रही है 2089, which means what? This to the tune of 20 crore. So 20 crore, almost 21 crore short happened on the call side, and the short unwinding on the put side happened to the tune of how much? 12.43 crores, right? So ये दोनों ही जो एक्टिविटी है, यही मेन एक्टिविटी है। अब देखिए, जब आप इसको मनी फ्लो के एंगल से इस तरीके से आप डिवाइड करके देखेंगे, तो आपको हर चीज पता चल रहा है। यहाँ पे पुट बाइंग इनिशियली हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा जो है ना शॉर्ट अनवाइंडिंग हुई थी, काफी ज्यादा। तो जो इतने दिन से शॉर्ट कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं लगा होगा शुरू में, अब तब मार्केट गिरा नहीं था। उस टाइम पे मार्केट कितना चल रहा था? उस टाइम पे 21,500 आई थिंक 20 या ऐसे कुछ था, 500 के ऊपर ही था, है ना। वो 500 का लेवल टूट नहीं रहा था। So markets were well above 21,500, and it was not kind of breaking. But you see the activity, there was a massive amount of short unwinding from the put sellers. They closed their shorts, they rather started to cover their shorts, and then fresh
call sellers came into the market. So short build-up on the call side. These are the two predominant activities that we're seeing. So now what we will do is, we will just, for the timing, isko copy and paste it so that it remains with us as a reference, right? Okay. Now let's take another data from some time later. Okay. Just a minute. I will. So this is my data at 12:10 p.m. So this is the picture at 12:10 p.m. Now I have another data which when markets actually started to give up, and just before the breakdown, markets at around 12:50, yeah, at around just before 1 o'clock, around 12:45 around that market just came up. एक बार वापस से थोड़ा सा नीचे 500 के आसपास जाके it came up to about I think 21,540 in that mark, and it was looking like that it might go up as well, है ना? So वहां पे देखते हैं जो 12:50 का हमारे पास में जो डेटा है, वो हम डेटा अभी हम इसमें डालेंगे, है ना? सो मैं ये डेटा मेरे पास में कहीं और सेव्ड है, तो मैं इसको यहाँ पे वापस से आपके सामने मैं डाल रहा हूँ। तो ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब ये 12:50 का है, ठीक है? अब कॉल का प्राइस भी मेरे को डालना होगा, और इसको हम कंपेयर करेंगे वही 10 बजे वाले डेटा से ही, है ना? सो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि कितना कुछ जो भी है चेंज हमारा आ रहा है, ठीक है? सो ये हमारा पुट की ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमने नंबर्स यहाँ पे डाल दिए, और पुट का एलटीपी। सो पुट एलटीपी इज हियर। अब जैसे ही हमने यहाँ पे नंबर्स को डाले हैं, ये हमारा शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप का ये जो है यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया, और हमने इसको ये पाइवट टेबल को बस हमने रिफ्रेश करना है। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी डेटा मतलब शॉर्ट बिल्डअप अनवाइंड लगा हुआ है, पुट ऑप्शन साइड में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है ना? सो देयर वाज नॉट मच ऑफ एन इंप्रूवमेंट on the put activity. So short unwinding kept on happening, right? And then when market started to accelerate on the downside, तो हम थोड़ा सा इसके बाद का हम डेटा ले लेंगे, उसको हम 1:40 का एक बार का हम डेटा लेते हैं। अब मैं बताऊंगा ये पर्टिकुलर टाइम मैं क्यों ले रहा हूँ, सो वो आपको और उसमें क्लैरिटी आ जाएगा। एक बार मैं डेटा डाल देता हूँ। सो दिस इज फ्रॉम 1:40 PM 1:40 PM। उस टाइम पे मार्केट ऑलरेडी गिरना मार्केट ने चालू कर दिया था। सो मार्केट एक्चुअली करीब 1:10 वहां पे जो है एक्सेलरेट होना चालू हुआ 1 बजे के बाद, है ना? सो अब उसके बाद में ये देखिए, अभी पुट का ओपन इंटरेस्ट, चलिए ये रहा पुट का ओपन इंटरेस्ट। अब ये जैसे ही डेटा आएगा तो हमको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा था 1:40 में, जब मार्केट गिरना चालू हुआ, ठीक है? सो इस तरीके से अगर आप डेटा को अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? अभी देखिए कितना बड़ा नंबर यहाँ पे आना चालू हो गया, देख रहे हैं आप? तो ये अगर हम इस तरीके से सोचें, देखिए कितनी मैसिव पुट बाइंग हो रही है यहाँ पे। 19,145 लाख मतलब 190 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 200 करोड़ का यहाँ पे उस शॉर्ट ड्यूरेशन में ऑप्शन पुट साइड में बाइंग हुई थी, ठीक है? शॉर्ट अनवाइंडिंग कितना जबरदस्त, ये आप देख पा रहे हैं फिगर। और वहीं पे करीब 32 करोड़ का वापस से कॉल ऑप्शन बेचा गया था। अब ये अगर हम इस चीज को थोड़ा सा एक प्लॉट में डालें, इफ वी वांट टू सी दिस एज एन इमेज, एज अ हाउ इट इवॉल्व्ड, तो इसको वापस से आई विल जस्ट गो बैक टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड just a minute. So can we have the Excel
I mean the PPT on the screen, please. Yes, thank you. So ये देखिए, इसमें ये वाला ग्राफ इधर आ गया है, वही वाला जो पहले मैं शो कर रहा था. सो राइट, सो आज का ये एग्जांपल है. अब इसमें देखिए, ये पूरा आपके सामने में है पिक्चर. पहला तो एक आप ट्रेंड लाइन देख पा रहे हैं जो कि 21,500 के लेवल पे क्लियर ब्रेकडाउन था. दिस इज अ 10 मिनट चार्ट, 10 मिनट डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, इसके साथ देखिए आप ऑरेंज कलर में कुछ नंबर्स भी देख पा रहे होंगे, है ना. सो दोज नंबर्स आर बेसिकली दी पीसीआर नंबर दैट वी आर लुकिंग एट. सॉरी, we are looking at the PCR numbers in orange color, and then in black color we have the time. तो ब्लैक कलर में हमने टाइम भी यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन से टाइम पे क्या हुआ. सो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम हर 20-25 मिनट या हर आधे घंटे या 1 घंटे, डिपेंडिंग ऑन हाउ द मार्केट इज एक्टिव एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज हैपनिंग इन द मार्केट, उसके हिसाब से हमको ये डेटा रिकॉर्ड करना होता है. ठीक है ना. एक जनरल रूल ये है कि जब भी मार्केट में कुछ ऐसा आपका एक बार ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया, तो आपने पुट ऑप्शन लेट से खरीद लिया बेस्ड ऑन दिस ब्रेकडाउन एंड द डेटा. ठीक है ना. आपको कॉन्फिडेंटली आपने देखा कि भाई 1 बजे जो है आपको क्लियर है, 1 बजे के टाइम पे डेटा आपका एकदम पूरा क्लियर था, जहां पे वो ये बता रहा था कि भाई एब्सोल्युटली जो है एकदम से प्योर आपका कितना है. ये एक बार पीसीआर को अगर हम देखें तो 0.78 का पीसीआर था 1 बजे के करीब, जो कि 12 बजे जो हमने देखा था 0.85 था, है ना. तो वहां से पीसीआर आपका कम हो रहा था. फिर प्लस आपको क्या मिला, आपको एक टेक्निकल ब्रेकडाउन मिला देखने को. तो ये यहाँ से पूरा क्लियर यही हो जा रहा है कि आपका बायस टेक्निकली जो आप देख रहे हैं उसमें ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी आपको सपोर्ट कर रहा है ना. तो आप शॉर्ट में जब आ गए, उसके बाद में आपको रिव्यू कब करना है? रिव्यू तभी करना है जब आपको लगे कि अब मार्केट में शायद कोई रिवर्सल आ रहा है. जैसे 1:40 का जब आप डेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लंबा सा स्पाइक है. मतलब मार्केट अचानक से एकदम जो है सीधा 21,400 के लेवल से गिर के 100 पॉइंट विद इन 10 मिनट्स 21,300 का लेवल लगाया और वहां से सीधा बाउंस होके वापस 21,375 के आसपास में आ गया था, है ना. तो वो इतना जब एक शार्प गिरावट के बाद एक वापस से जब बाउंस आ जाए तो दैट्स वेयर यू वांट टू अगेन इवैल्यूएट कि भाई शुड आई कवर माय शॉर्ट्स और नॉट, व्हाट इज द ओपन इंटरेस्ट डेटा सेइंग. तो 1:40 का अगर हम डेटा अगर हम उठा के देखें, एक बार हम वापस से थोड़ा सा एक्सेल में जाना चाहेंगे. 1:40 का जो डेटा है वो हम एक्सेल में ही एक बार देख लेते हैं, है ना. सो again we have to do this same activity. Just a minute, I'm going back to the Excel once. Can we get the Excel please on the screen? Yeah, thank you. राइट. सो जैसे कि मैंने बताया, जब भी हमको यहाँ पे डेटा डालते हैं उसको हमको एक बार जो है पहले से थोड़ा सा कंट्रोल F मार के हमको रिप्लेस कर लेना होता है, नहीं तो वो डेटा कॉमा के साथ आ जाता है. सो वी हैव टू रिप्लेस द कॉमास विद ब्लैंक. सो दैट इज अ प्रॉब्लम आई गेस विद द NSE CSV फाइल्स. सो यू सी this is the data from 1:40 p.m. So at 1:40 p.m. your PCR came down to 0.62. So despite that huge move from 21,400 to 21,300 and back again at 21,370, the PCR did not really move and it remained negative. And if you wanted to look at this, refresh all again, these numbers you see, the tremendous amount of short unwinding to the tune of 200 crores and short build up on the call side to the tune of 193, which means almost 200 crores. So massive shorting activity. Both of them are, shorting activity. So these numbers kind of give you this confidence to, continue with it. And then again, if we, pull up some more data and if you would have seen, this was, continuously it remained negative. So मैं एक बार आपको लास्ट का एक डेटा दिखा दे रहा हूँ. 3:10 जब मार्केट, मैंने लास्ट इस डेटा को रिकॉर्ड किया था तब मार्केट बंद भी हो रहा था. इनफैक्ट मैं 3 बजे का दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा और
हेल्प होगा समझने में, क्योंकि 3 बजे जो है ना एक बार एक स्पाइक आया था, राइट? सो 3 बजे का मैं डेटा वापस से मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ. सो दिस इज द कॉल हुआ एट 3 o'clock and call LTP at 3 o'clock, and then we will have the put Y and put LTP. So these are put Y and put LTP. Now again we will have to do the same thing. We will have to replace the commas, नहीं तो गलत नंबर्स आएंगे, है ना? देखिए कितने सारे कॉमास आ जाते हैं इसमें. सो देखिए अगर आप अब वापस इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश मारेंगे. अब देखिए, आप देख रहे हैं 200 करोड़ का 700 करोड़ हो गया शॉर्ट साइड में ऑन द कॉल साइड. ये मैसिव नंबर्स आप देख रहे हैं. इतने बड़े नंबर मैंने बहुत दिनों बाद मतलब देखा होगा. मतलब आई डोंट थिंक आई हैव सीन इन द लास्ट 1 or 2 years. मैसिव. और ये जो है देखिए पुट साइड में कितना डिफरेंस हुआ सुबह से लेके 85,582 lakhs. 85,582 lakhs, which means almost 850 crores. So this is just the M2M differential that happened during from 10 o'clock to 3 o'clock on the put side, the short unwinding that happened. Massive, है ना? And in net, if you see in the on the put side, the net money flow that happened was to the tune of 86,720 lakhs, which means again 867 crores, just close to 900 crores. And on the put side, similarly, minus 73, minus 734 lakh crores. So these are massive numbers. So huge amount of, I would say, call unwinding happened. Short build-up happened on the call side. Full-fledged calls were shorted, and put unwinding happened. So this is the picture, and you compare this with the early morning figures, you just will not be able to relate. देखिए यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है. ये कहाँ 1200 था और यहाँ कहाँ पे 85,000 पे पहुंच गया, है ना? ये 2000 था, मतलब 20 करोड़ became 700 crores on the call shorting side. So this was the impact. And now let's go back to the PPT again, and वहां पे हम देखेंगे कि जो निफ्टी के साथ में अगर आप देखते हैं, सो जस्ट कैन वी गेट द पीपीटी वंस अगेन? Yeah, I think it is still on the Excel, so we need the PPT, please. Just a minute. Okay, anyway, we can even see the screen here. So देखिए निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, देखिए एक माइनर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन यहाँ पे जो आया था 21,500 के बाद में, उसके बाद अगर आप देखें, सो फ्रॉम टाइम टू टाइम 1:40 में देखिए ये 1340 बता रहा है. सो वहां पे वो एक बड़ा सा स्पाइक आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, है ना? सो वहां पे जब आप अगर आप इवेल्युएट करते हैं ये पॉइंट पे ना, तो यहाँ पे आपका आई वुड से जो पहला आप देख रहे हैं 1340 मतलब 1:40 वो स्पाइक के बावजूद भी पीसीआर में कोई चेंज नहीं आया. उसके पहले का पीसीआर जो था उसके हिसाब से ये कम मतलब नीचे की तरफ ही है. फिर देखिए उसके बाद में 2:20 में पीसीआर आ गया 0.55. डिस्पाइट अ ब्लू कैंडल, वहां पे देखिए एक बार मार्केट रुका और काइंड ऑफ थोड़ा सा लगा कि बाउंस भी आ रहा है 21,300 के लेवल पे, जो बीच में आप 2 कैंडल ब्लू कलर में देख पा रहे हैं, है ना? सो 2:20 में स्टिल अगेन इफ यू लुक एट द पीसीआर एंड दीज डेटा, इट वुड हैव अगेन सेड ओनली वन थिंग कि अभी भी शॉर्ट ही चल रहा है. देयर इज नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि पीसीआर थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, तो ये 0.62 के बदले अगर इवन 0.65 भी आ जाता, तो भी हम ये सोचते कि नहीं एक बार शॉर्ट काट लेना चाहिए. देखिए आरएसआई वगैरह तो ओवरसोल्ड था ही, तो खाली आरएसआई देख के नहीं होता, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ओवरसोल्ड बिकम्स मोर ओवरसोल्ड एंड मोर ओवरसोल्ड बिकम्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीम ओवरसोल्ड, है ना? So this is where this confidence kind of helps you. This kind of data helps you to have that confidence key whether you should hold your positions on the short side or not.
because it is often very tempting and confusing also. What should you do? क्योंकि जैसे ही मार्केट एक बार 50 पॉइंट ऊपर आ जाता है और आप शॉर्ट में है, आपका 200 रुपए का ऑप्शन अचानक से 180 आ जाता है, सो आपको लगता है कि शायद मैंने गलती की, मेरे को काट लेना चाहिए. सो देन यू आर लाइक very edgy and you want to close your positions quickly. So इन दोज टाइम्स ये आपको डेटा जो है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. बट ये अगर आप डेटा देखेंगे तो मे बी यू विल नो हाउ टू ट्रेल. आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, बट आप पोजीशन से फटाक से निकलेंगे नहीं, है ना. और फिर देखिए ये 3 बजे वापस से एक ब्लू कलर का डंडा आया. सो वी आर नॉट मेजरिंग एट रैंडम इंटरवल्स, वी आर ओनली मेजरिंग व्हेन वी फील दैट वी नीड टू चेक, बिकॉज prices are bouncing off. Because prices are bouncing off, right? So whenever there is a scope that which says that prices are bouncing off, so we want to cross check, right? So at 3 o'clock again 0.55 से उल्टा और कम आ गया. पीसीआर 0.55 पे था और 3:10 का आपने पिक्चर देखा ही, वहां पे पीसीआर आपका 0.46 था. ये देखिए पीसीआर का नंबर इधर है ना, ये रहा. आपने अगर इसको अगर आप वापस से ये कर लेंगे अपने, ये हमने रिप्लेस तो कर लिया होगा शायद एक बार, या है ना. तो ये 3 बजे का डेटा है और 3:10 में अगर आप वो डेटा अगर हम डालते हैं तो दिस इज बेसिकली 3 o'clock डेटा. एंड एट 3 o'clock ऑल्सो वी हैड 0.5 जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना. एंड 3:10 जो फाइनल मेरा रिकॉर्डिंग जो यहाँ पे था, मार्केट उस टाइम पे 21,135 के लेवल पे चल रहा था. पीसीआर तब भी 0.46 पे ही खड़ा था, राइट. सो ये एक बेसिकली एक टाइप से आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप मनी फ्लो के डेटा को देखें, जिस कैटेगराइजेशन के एंगल से हम देख रहे हैं, तो उसमें हमेशा आपको थोड़ा सा वो एक एज मिलेगा ये समझने में कि जो एक्टिविटी हो रही है वो क्या है. जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि आप जब मार्केट रेंज में रहने वाला होता है ना, तब मैंने देखा है कि यू विल सी अ शॉर्ट बिल्डिंग एक्टिविटी ऑन द कॉल साइड एज वेल एज ऑन द पुट साइड एज वेल. सो आप दोनों तरफ देखेंगे, कॉल सेलिंग और put selling also, both of them are getting heavily active, right? So can we have the PPT again, please? Not able to switch. Okay, thank you. So this was the screen that I was talking about. So anyhow, and with this I conclude today's session, and we can have a round of question answers here. So if you want, you can type in your questions and we will try to answer them. Yeah. And yes, so you can type in your queries if you have. Okay, how can we get the Excel? Maybe we will try to share it, and you can write a mail to us and we will reply back with the Excel. And we can also use a VWAP with this. Okay, so where can we know more about the PCR and money flow cases? See, PCR, there is ample amount of material on the internet, and even if you follow our YouTube channel, I think there are a couple of videos on that as well, on PCR and how to read them. And money flow, this particular concept that I have discussed is solely our own proprietary understanding and way of measuring things. So you will probably not be able to find this on the internet. So maybe this is going to be on the YouTube, and you can watch this video again if you want, and you can create your own Excel if you don't want
to use this Excel, or maybe you can build a better Excel if you're good at it. Okay, like short build up on call, short unwind on the put means the market is bearish. Short build up on the call is bearish, and short unwind on the put is also bearish. Yes, there will be other cases, right? Yes, I mean, as I said, there are 4 cases on the bearish side. So first is you can buy a put option. Second is you can sell a call option, which is the short build up on the call. Third is you can unwind your short puts. If you are short on the put side, you don't want to remain short. Like in today's case, you do not want to remain short on the put side, correct? So you want to unwind your shorts. And the last thing that you can do is that if you by chance had a long call, you will want to close that at the end, right? Because the risk is defined and it is not an absolute emergency, just because of the fact that you have a defined risk. So that is how it is. So 4 categories on each side. uh, well, for particularly this technique, I have seen works best for intraday. And for a carryover basis, I think it is better that we look at other things also, because the PCR data, it kind of, in my experience, it is more effective during the day, because it talks about the sentiment of the market participants during the day. A lot of people come in and close their position. So huge volume activity happens on the derivatives segment in the recent past few years, maybe the last 6-7 years, and which is why, because of so much of participation, it has become a very, I would say, important tool and an interesting tool to look at the derivatives data, right? So how can we analyze the next move? As I said, you have to have a core mechanism, which could be a technical analysis. Like I do it, I use simple trend lines. You can use it Fibonacci. Yes, I think somebody was writing about Fibonacci levels. Yes, Fibonacci levels you can also use if you are looking at the Fibonacci levels, and if you are thinking that there is a possibility of a reversal from a Fibonacci number, then that's where you can look at these open interest numbers and see if there is any change as per your calculation, or as per your forecast or not. So if it is in sync or not. Okay, so can we analyze the next move, Mr. Sai Krishna? Yes, sir. As I said, we can analyze it on the intraday, which is where I feel this tool becomes more effective. And of course, you can try out with other time scales also, because see, first of all, we have to understand that we are dealing with a weekly options expiry. Then the option data that you see during the day, and if you compare this data at the end of the day with the end of the day file, so you will see that there is a lot of change. So lot of activity builds up during the day, talks about the market sentiment, gives us a lot of indications, lot of noise activity happens, and then by the end of the day, maybe 50% of the positions or maybe 30% of the positions are closed out. So and of course, see, the issue is that when we talk about predicting for the next day, there are quite more variables at play, because what will happen during these 8 hours or 10 hours where we are closed, we really do not know, right? So that's what makes the I would say the science of predicting the next day's move based on open interest slightly less effective. That's all. Yeah. So, any more questions? I hope that this session was fruitful to you. And with some practice, I guess, yes, maybe we can share this Excel file, and with some practice with the open interest data directly from the NSE website, which is free for all and authentic, I guess, from the NSE. Therefore, you can use it on a 10-minute chart. Along with that, you can, probably get good results on this. Right? So, is there any more questions? And else we can close the session for the day. And
That will be it. Okay, mail ID. Sure, sir. Mail ID will be shared. And just a minute. Can we type in the mail ID, please? Can we share the mail ID here so that we can, our participants can get the mail IDs? So you can leave your mail ID and we will get in touch with you. And okay, so last question, so how do I get OI Excel data? So that's what I'm saying. So we will be sharing it. You can leave your email ID in the comment sections and we will get in touch with you, right? So thank you so much for being such a wonderful audience and for your time. And we will see you around with the next session of Options Wednesday sometime around. See you soon. Thank you so much.